Okay, This so conference now will now be recorded. is it simply if I'm explain you in a cloud region, suppose crow, this is a one region is available and this is another region is available. Like this region is look like India and this is a look like another region is look like an US. Now, when you create a two VNets, you can create a one VNet of here and also you create another VNet of here. And now you create a one more VNet in this location. That means these are the three VNets. Is VNet 1, it use IP of like VNet 1 use IP of 10.0.0.0/24. This is second VNet is VNet 2 and now it's using the IP is for example 20 or like 192.168.1.0/24. And now it's a one more VNet is available is using like a 172.16.0.0/24 and this is my VNet 3. The by default they're the same VNet systems are connected with each other. Got it my point? By default they're the same VNet subnets connected systems are connected with like the system A is communicate with system B because the both VMs are work connected with VNet 1. But if I'm provide the communication like one system is available and another system is available. Now the system X communicate with system Y. यानी कि X VM communicate with system Y. So when you provide the communication between two different VNets, so you can enable a VNet peering. So when you provide the communication between two different VNet, you enable the VNet peering. Got it the point why we have enabled the VNet pairing? Everyone. Now I'm already explaining you the reasons, the same reasons, same VNets are connected with each other. But if you create a multiple VNet in same region, it's not communicate with each other by default. When you provide the communication between the same VNets in a same region, you can enable the VNet pairing, or either you can provide the communication between India to US. You also enable the VNet pairing. So it means you are saying if we want to connect two VNet with each other, we can connect, either in the same location or the different location as well. But we want to connect multiple VNet with each other, it could not be possible, right? Yeah, no, it will be possible with the help of pairing. With the help of pairing, yes, yeah. With the help of pairing, that could be possible. Okay. Yeah, with the help of pairing, we have just provide the communication between multiple VNet. Right. VNet means virtual networks. Or with in one virtual network is 1,000 machines. These 1,000 machines are connected with the 1,000 VNet 2,000 machines. Like you are using a VNet 1. That means your VNet IP is 10.0.0.0. Or my servers are connected with VNet 2. And 60 servers are connected with VNet 3. But we have communicate with each other. हम सब आपस में connect होना चाहते हैं. So we have provide the connect with the network to network. पहले हम अपने networks को communicate कराएंगे. तो मेरे नेटवर्क हो गए तो सिस्टम तो अपने आप ही हो जाएंगे ना. गॉट माय पॉइंट. अगर इंडिया और यूएस कनेक्ट हो गए तो आपस में लोग तो आपस में कम्युनिकेट कर ही लेंगे ना फिर. यस यस और नो. अगर दोनों के बॉर्डर ओपन कर दिए जाए तो फिर लोग तो बात कर सकते हैं ना. Right, and here we have created 3 VNets and 2 are in the same location and the third one is in the different location. Right now, so we have created 3 VNets. I'm just login with Azure portal. First of all, I'm create a resource group.
Okay. And now just click on a create, and I'm create a pairing hyphen rg, and now I'm just create these resource group in each location, and now review and create. After that, I'm create a three networks, three virtual networks. So I'm just click on a home and then click on a virtual network and create. Then create our two networks in India location and one network in East US location. So I'm select a subscription, select a resource group, and now I'm just create a like a VNet 3, and I'm create a VNet 3 in US location. Next, I'm just give the IP of this particular location is 172.16.0.0/24, and now I'm just create a one subnet, and I'm just give this subnet name is look like a Srishti, and now it's using 172.160.0.0/26. दैट मीन्स कि आई एम यूजिंग कि मैं सिस्टी के लिए एक सबनेट क्रिएट कर रहा हूँ जो कि यूएस लोकेशन पे है, लाइक कि सिस्टी जो अपने सिस्टम्स है वो यूएस लोकेशन पे डिप्लॉय करें, और आई एम गिव द /26, दैट मीन द 64 आईपीस में अलाउ कर रहा हूँ, एंड देन क्लिक ऑन एड एंड रिव्यू एंड क्रिएट. गॉट इट द पॉइंट? इज इट क्लियर? सृष्टि, इज इट क्लियर? Yes, sir. The same as I'm created two more, but I'm just create कि आपका जो VNet है is available in East US. That's why I'm creating East US now. कि like Mukesh and Rakesh are available in India location. तो मेरी एक कंपनी है जो कि VNet 1 से कनेक्टेड है, मुकेश की कंपनी VNet 2 से कनेक्टेड है, एंड सिस्टी की कनेक्टेड VNet 3 से है. बट मुकेश और राकेश की कंपनी इज अवेलेबल इन इंडिया, बट सिस्टी कंपनी इज अवेलेबल इन ईस्ट यूएस, और मैं चाहता हूँ कि ये तीनों की तीनों कंपनी आपस में कम्युनिकेट करें. So we are using the VNet pairing. Is it clear, everyone? It's short layman language. Yes, sir. Right. Yes, sir. So now I'm just created two more VNets. I'm just click on home and then again create in virtual network. Or now I'm just create a VNet 1 in India location. So I'm just select a resource group, and now I'm just click on VNet 1, or I'm select a location. I'm select a location of like Central India. I'm select a Central India location. Next, and I'm using the IP is 10.0.0.0/24, and now I'm also create one subnet and like a subnet for our AKS. It's Rakesh, and then using the IP is 10.0.0.0/26. You know the very well the meaning of the /26. And now review and create. We are enabling 64 IPS, right, sir? Yeah, but in 64 only 59 IP is usable. The Right. 5 IP is reserved by the Azure. For one is network, gateway, DNS, and broadcast. Correct. Now I'm create a one more VNet. I'm just click on VNet, virtual network. Now click on create and select a source group. Is it VNet 2? Or now the center India, I'm just click the center India, then next. It use IP is in class B is in like a 172.168.0.0. Sorry, is it 192.168.1.0/24? And now the add subnet with the name of Mukesh, and now it's 192.168.1.0/26. And now the add, review and create. So now I'm create three VNets. Is it clear now? Current scenario So, is clear, guys. Yes, yes. sir. So now after create a VNet, I'm just create a one server. I'm create one server in this location, VNet 1. I'm create another server in VNet 2, and now I'm create one more server in VNet 3. Got it, guys? So I'm just go to home
and create a 3 virtual machine with attached with 3 different VNets. So I'm just click on our virtual machines, then create, select resource group and select is like Rakesh, is it VNet 1? And now the select location. So what happened? It's not show the reason. Why this reason is height? Wait guys, I'm just create a new one. Now for reason is height. If I'm just a minute guys, I'm just open a new Refresh the window. portal, let's see. Yeah. No, it's reason option is hidden and height. Just a minute, I'm just click on again virtual machines. Now click on virtual machines. Because recently some updates are coming in Azure, so the height, this location is height, is central US. So now I'm just select a subscription, select resource group is East US. Maybe we have create a one more resource group. Just a minute. तो मे बी गाइस कि अजूरे ने कुछ चेंजेस करी है और रिसोर्स ग्रुप को भी रीजन स्पेसिफिक बना दिया हो. सो नाउ आई एम जस्ट क्रिएट वन मोर लाइक INDIA India -RZ. So I'm just click on center India. So and review and create. And now I'm just go to virtual machines and then reload this portal. क्योंकि गाइस पहले एक्चुअली क्या है कि हम किसी भी रिसोर्स को किसी भी रिसोर्स ग्रुप में अपडेट करा सकते थे. But now I'm just facing this challenge. So now I'm just create a India resource group. Then my center India option is coming. So I think so the resource group is region specific कर दिए गए हैं. Got it guys? तो आप एक रिसोर्स ग्रुप में अदर रिसोर्स रीजन की रिसोर्सेज को ऐड नहीं करा सकते हो. इज इट क्लियर गाइस? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया सर. जस्ट पहले मैंने आपको बताया था कि एक रिसोर्स ग्रुप में आप किसी भी रीजन की रिसोर्सेज को ऐड करा सकते थे. right, yeah. I think like suppose I want to select the India location और वी कैन ऐड द or यूएस लोकेशन VMs. US location VM as well. या बट यहाँ पर ये ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं हो रहा है. तो आप मुझे तो जैसे जो भी हमारा सर्वर क्रिएट करेंगे तो हमें सेम उसका लोकेशन पे रिसोर्स ही सर्वर पे करेंगे. यानी कि अब लोकेशन वाइज रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ेगा. सो मैंने यहाँ पे एक इंडिया RG बनाया है. नाउ आई एम जस्ट select नो एंड select 20 server 12 and now RAM and I'm just put the ICCP info TEC stack. The password is wait. एक चीज और क्वेश्चन क्लियर करना था. जैसे हमने 64 जो बिट्स निकली थी ना वर्चुअल मशीन में, हम जिसको ऑन कर रहे थे उनको क्या बोलते हैं? होस्ट बिट्स बोलते हैं क्या? ऑफ बिट्स, हाँ ऑन बिट्स को नेटवर्क बोला जाता है. और नेटवर्क बिट्स बोलते हैं ना उनको. Yeah. Then next and I'm just click on next networking. I'm select VNet 1. So यहाँ पे 10 की रेंज से बना रहा है. Oh, it's not fetch. ये हमारे नेटवर्क को भी फैच नहीं कर पा रहा है. Got it guys? Yeah. ये हमारे नेटवर्क्स को भी फैच नहीं कर पा रहा. इफ यू रिमेम्बर कि हमने दिस विल बी अलाउ द ऑल आईपी एड्रेसेस टू एसोसिएट योर वर्चुअल नेटवर्क. तो हमने खुद एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर इंडिया के अंदर बनाए हुए हैं ऑलरेडी.
So I'm just go in my virtual machine, और virtual machine पे आने के बाद यहाँ पे actually क्या है, I'm just going virtual network, and this virtual network is available in this pairing resource group. That's why it's not fetching. So now I'm just delete this Deleting, right? virtual networks and again create. Got it? Hmm. So first of all, I'm just delete the VNet one and again create a VNet one, then adding. It means we can't create same group in the same location by the same name, right? Yeah, in a यानी कि सेम रिसोर्स ग्रुप ही मेरे को मैं अंदर सारी चीजें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी. सो Hmm. कोई नहीं, चेंजेस आते हैं तो अच्छा है ना, कंटिन्यूस यूज करने पे चेंजेस पता भी लगनी चाहिए ना. तो दिस इज द बेनिफिट फॉर द कंटिन्यूस, अगर आप पोर्टल से अटैच रहोगे. So now I'm just click on a home and now I'm just create a virtual network, and I'm just create one more virtual network with the name of India RG, and now just give the VNet1 and central India location, then click on a next, and now just put the IP/24, and now the add subnet with the name of Rakesh, and now is it 10.0.0.0/26, and now add, and now create, then click on create. Then now I'm create a one more virtual network, and then click on create. And now the subscription, select India RG, and now with the name of VNet2. Next, and use the IP addresses is 192.168.1.0/24. रिसोर्स ग्रुप हम सेम ही यूज कर रहे हैं ना सभी के लिए. Yeah, okay, yes. Mukesh, and I'm using the 192.168.1.0/26. And now add, and now review and create. Now I'm create a virtual machines, create, and Azure subscription, select India RG like RAKES Rakesh VM1, and select no server 2012, where is server 2012, and now the now the allow these protocols RDP and other protocol जो भी आप allow कराना चाहते हो. Now next this, now click on next, and you can see that at this time it fetched the both VNet. Got it? So now I'm just connect this machine with VNet1, and now next and review and create. Is it clear, guys? तो यहाँ पर क्या changes हुई हैं? I'm explain you later. Just wait for 1 minute. I'm just create a 3 virtual machine. Then I'm Okay, explain you. sure. So I'm just click on home, then virtual machines, then create virtual machine, and now select ing, and it is like MUKESH Mukesh hyphen VM2 and Asia Pacific Central India. तो नाउ पहली मशीन मेरी बन गई है, सेकंड मशीन में बना रहा हूँ एशिया पैसिफिक सेंट्रल इंडिया. तो अब यहाँ पे देखिए हाइड नहीं हो रखा है, तो समटाइम्स हाइड आ रहा है, मे बी कंसोलिडेट सप्लेट अपलोड हो रहा है या क्या है. तो ऐसा चैलेंज नहीं आना चाहिए. गॉट इट गाइस?
तो देखिए अब यहाँ पे सारे रीजन दिख रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि बैकएंड में कंसोल का इशू भी हो, और मे भी हो सकता है कि आपको रीजन वाइज रिसोर्स ग्रुप है, सो आप कॉमन रिसोर्स ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो और अलग अलग रिसोर्स ग्रुप भी. सो नाउ सेंटर इंडिया, and I am select a server 2012 and ICP 40 is back. And the one is AST, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And now allow these protocol, then next, and now I'm just connect with this second VNet 2 with the Mukesh, and now review and create. So this is my second machine is deployed in cloud. Now I'm deploy the one more machine. Now click home and then now click on virtual machines and create there the one more virtual machine with the name of Seshti in East US location. So if I'm select this one, and now yeah, you can see कि maybe a guys console से related issue था, तो अभी working कर रहा है, so I'm just select the East US and I'm just give the name of machine is Seshti hyphen VM3, and now at this time the same resource group and East US location, because the SST is deployed in East US location infrastructure, and now the ICCP infotech, and now password is AST at 1234567 the AST at 1234567 and now these allow the protocols, or either you can create a network security group and then click on next, and now here is it 60 VM3 IP and India RG-VNet. गाइस देखिए यहाँ पे ये चैलेंज है, यहाँ पे ये फिर से क्या बना रहा है, एक नया वर्चुअल नेटवर्क मेरे लिए बनाना स्टार्ट कर रहा है. गॉट इट गाइस? जस्ट अ मिनट. फिर से अगर मैंने वहां पे रिसोर्स ग्रुप है, तो देखिए यहाँ पे हमने एक सृष्टि के नाम से वीनेट बनाया था, अगर याद हो तो, ईस्ट यूएस लोकेशन पे. ठीक है ना? ये यहाँ पे क्या कर रहा है, दोबारा से हमने जो वीनेट बनाया है वो नहीं शो कर रहा. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये यहाँ पे इसने ये तो दिखा दिया है, बट हमारे वीनेट शो नहीं कर रहा. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं उसी पेयरिंग रिसोर्स ग्रुप को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ नेक्स्ट, और अब देखिए यहाँ पे वीनेट 3 इसने दिखा दिया. तो आई एम जस्ट डिप्लॉय दिस वर्चुअल मशीन ऑल्सो. तो गाइस लॉजिक क्या है, मैं अब आपको बता देता हूं कि दैट्स बेटर कि आप रीजन वाइज अपना रिसोर्स ग्रुप बनाएं. लाइक एक रिसोर्स ग्रुप मैंने ये क्रिएट करा, उसके अंदर ये ऐड ऑन कर दिया, और एक रिसोर्स ग्रुप ये क्रिएट करा है. तो दिस रिसोर्स ग्रुप विद द नेम ऑफ INDIA India-RG. ओके गाइस, गॉट इन माय पॉइंट? और इंडिया रिसोर्स ग्रुप के अंदर इंडिया की सारी रिसोर्सेज ऐड कराई हैं, और एक मैंने क्रिएट करा है ईस्ट यूएस -RG, जिसका नाम फिलहाल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पेयरिंग आरजी. तो पेयरिंग आरजी वाला जो रिसोर्स ग्रुप है ये मेरे ईस्ट यूएस के अंदर है. इज इट क्लियर गाइस? पहले क्या था, पहले का कॉन्सेप्ट क्या था कि आप दोनों एक ही रिसोर्स ग्रुप में सारे रिसोर्सेज ऐड कर सकते थे, बट अब यहाँ पे हमें चैलेंज क्या देखने को मिल रहा है, हमें चैलेंज देखने को मिल रहा है कि हमारी जो
रीजन वाइज ही रिसोर्स ग्रुप काम कर रहा है, एक कॉमन रिसोर्स ग्रुप के अंदर हमारी रिसोर्सेज फैचिंग नहीं हो रही है। इज इट क्लियर गाइस? यस श्योर, सृष्टि, इट मींस मुकेश, हमें, यस रीजन हमें वाइज अगर दूसरे रिसोर्स ग्रुप बनाना रीजन होगा। वाइज क्रिएट करना पड़ेगा, यस सेपरेट। या सेपरेट सेपरेट, पहले कॉमन में हो रहा था, क्योंकि ये हम्म अभी हमने प्रैक्टिकली यहाँ पे देखा है। सृष्टि, हम्म गॉट इट द पॉइंट? Yes, sir. Now, so as per the diagram, if you see, I'm create a 3 VNet first of all, 1, 2, and 3. Second, I'm create a 3 virtual machine, each of 1. Got it? Now clear this point? अब simply I'm just login with VNet 1. मैं यानी कि राकेश की वर्चुअल मशीन से लॉगिन हो रहा हूं। आई एम जस्ट लॉगिन विद राकेश, एंड राकेश की वर्चुअल मशीन से ही मैं क्या करना हूं, मैं इस सृष्टि वाली मशीन को एक्सेस करना चाहता हूं। इसके नीचे आप ये लिख दो, वीएम लिख दो, राकेश वीएम। या एक मिनट, मैं सृष्टि वाली वीएम को एक्सेस करना, मुकेश वाली वीएम को एक्सेस करना चाहता हूं, एज वेल एज मैं इसी मशीन पे कौन सी वीएम को एक्सेस करना चाहता हूं? मेरी कर लो, ऐसे ठीक ही कर लो। दोनों दोनों ही करना सृष्टि, चाह रहा हूं, दोनों ही करूंगा। गॉट इन माय पॉइंट? VM, this is a Mukesh, and this is a Srishti VM. बट गाइस अभी देखिए, क्या हम पहले चेक करते हैं कि क्या ये एक्सेस होती है या नहीं होती है। तो नाउ आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग इन विद राकेश VM, तो मैं पहले राकेश की वर्चुअल मशीन से लॉग इन हो जाता हूं। आई एम जस्ट क्लिक ऑन होम एंड देन क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन and click on Rakesh VM and then copy the public IP, go to remote desktop connection, एक देख रहा था कि जैसे हमें आरडीपी पे एमएसटीएससी कमांड की बजाय हम उस पर भी जा सकते हैं, डाउनलोड करके बाय डिफॉल्ट वो भी ओपन हो जाता है ना, हम्म, तो उसको क्या दोनों हो बोलते हैं जाते क्या? हैं, बट डाउनलोड करके नहीं ले रहा मैं, अच्छा, ओपन वही होता है। नाउ पेस्ट, देन कनेक्ट, now the username is ICCP Infotech. सो गाइस देखिए, पहली VM VNet 1 की पहली मशीन तो एक्सेस हो गई। अब मैं इसी मशीन के अंदर से एक्सेस करना चाहता हूं सेकंड मशीन को, बट नॉट पब्लिक आईपी, वाया प्राइवेट आईपी, क्योंकि पब्लिक आईपी से तो एक्सेस हो ही जानी है। गॉट इन माय पॉइंट? ओके, तो पब्लिक आईपी को हम वो नहीं बोलेंगे ना, वीनेट पेयरिंग। नहीं नहीं, पब्लिक आईपी के थ्रू हो रही है तो वो विदाउट पेयरिंग भी हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक आईपी के साथ तो हमें कम्युनिकेशन करना ही नहीं है ना, हमें सिक्योर नेटवर्क बनाना है अपना। तो राइट, सिक्योर नेटवर्क बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पर प्राइवेट आईपी से मशीन को एक्सेस करता हूँ, नाउ यू कैन सी कि मेरी जो अनदर वर्चुअल मशीन है VM2 मुकेश, तो मुकेश का जो प्राइवेट आईपी इज इट 192.168.1.4 है। गॉट इट? एंड नाउ राइट। अगर मैं अब यहाँ पे जाके रिमोट डेस्कटॉप करता हूँ और मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ मुकेश की मशीन को 192.168.1.4, so it's give me the error. क्यों? ये अगर तब प्राइवेट मशीन से हो जाती जब ये दोनों VNet 1 में होती, बट मुकेश तो VNet 2 में है। यस और नो? राइट राइट, तो अगर मैं VNet 1 और VNet 2 को आपस में कनेक्ट कर दूं तो मेरा कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए। यस, और ये किसकी हेल्प से होगा? पेयरिंग को इनेबल इनेबल करना पड़ेगा। पेयरिंग पेयरिंग, कनेक्शन।
So after enable pairing connection, VNet 1 and VNet 2 is connected with each other. Got it, guys? Why I am enable the pairing? For connecting different VNet. Yeah. सृष्टि क्लियर है? पेयरिंग क्यों इनेबल कर रहे हैं? सर फिर से बता दीजिए। पेयरिंग का मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि VNet 1 और VNet 2 आपस में कम्युनिकेट करें, बट प्राइवेट लैन से, पब्लिक आईपी से नहीं, क्योंकि आपके पास अगर 1000 आईपी कंप्यूटर्स हैं तो आपको 1000 आईपी की जरूरत पड़ेगी। बट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, द पब्लिक आईपी इज पेडेबल, प्राइवेट आईपी इज फ्री। तो मैं चाहता हूं ना प्राइवेट आईपी के थ्रू मेरा कम्युनिकेशन हो तो मेरे पब्लिक आईपी की कॉस्ट बचेगी। तो मैं Yes, sir. पेयरिंग करने से हमारा प्राइवेट आईपी के थ्रू कम्युनिकेशन हो जाएगा, जो कि अभी देखिए मशीन एक्सेस नहीं कर पा रही है। नाउ हाउ टू इनेबल पेयरिंग? You can go to any VNet, either VNet 1 or either VNet 2. तो आप कहीं से भी जाके पेयरिंग इनेबल कर सकते हैं। So now I'm just go back in portal and go to VNet 1. सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, I'm just go in virtual network and after click on VNet 1. And now the VNet 1 पे जाने के बाद I'm just enable the pairing. You can see the option is available in pairings and add pairing. And inside the pairing with the pairing name. So this is my source. तो सोर्स मेरा क्या है? VNet 1. So I'm just like VNet 1 hyphen 2 hyphen VNet 2. Give the any name, जो भी आप दे रहे हैं। तो मैं VNet 1 से VNet 2 पेयरिंग करना चाह Okay. रहा हूँ। And 3 में नहीं होगा ना sir, क्योंकि हम 3 में नहीं दे रहे हैं ना रिसोर्सेज, 3 से नहीं हो सकता नहीं ना, नहीं राइट? नहीं नहीं, Okay. अभी नहीं दे रहे ना, अभी हम 1 by 1 करेंगे। गॉट इट? Okay. और दूसरा VNet 3 मेरा डिफरेंट रीजन में है, सेम Yes. रीजन में है भी नहीं। नाउ द Yeah. सेकंड, द वर्चुअल नेटवर्क गेटवे और राउटर। सो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट कर रहा हूँ रिमोट वर्चुअल नेटवर्क। तो यानी कि जो रिमोट वर्चुअल नेटवर्क है उसका क्या है? तो मैं चाहता हूं VNet 2 हाइफन 2 VNet 1। यानी कि मुकेश अपने एंड से VNet 2 to 1 करेगा, मैं अपने एंड से 1 to 2 करूंगा। गॉट इन माय पॉइंट? गाइस ये दो नाम क्यों दिए गए हैं? एक 1 से 2 के लिए और एक 2 से 1 के लिए, Right. यानी कि Right. डबल पेयरिंग कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है। 1 से 2 Yes. और 2 से 1, मुकेश टू राकेश, राकेश टू मुकेश। 1 पे Correct. नहीं है, 2 पे है। आई एम सिलेक्ट द सब्सक्रिप्शन, अब सिलेक्ट द वर्चुअल नेटवर्क। तो वो आप मेरे से पूछा है वर्चुअल नेटवर्क। सो VNet 1 पे तो मैं हूं, सो आई एम सिलेक्ट VNet 1 तो ऑलरेडी है, आई एम सिलेक्ट अब VNet 2, क्योंकि रिमोट लोकेशन मेरा क्या है? इज इट VNet 2? 2. एंड नाउ ऐड पेयरिंग। तो गाइस देखिए यहाँ पे दो पेयरिंग कनेक्शन इसने बना दिए, 1 to 2 और 2 to 1। इज इट क्लियर? Yeah. Yes. नाउ द पेयरिंग इज अपडेटिंग, आई एम जस्ट रिफ्रेश and now we'll try again. I'm just click on connect and now it's accessible. जो क्रेडेंशियल मांगेगा वो किस हम जैसे हम VNet 1 से कर रहे हैं ना, तो VNet 2 का मांगेगा ना यहाँ पर। हाँ VNet 2 की मांगे, VNet 2 की मशीन को VNet 1 पे रिमोट, जैसे आप अपनी मशीन पे क्लाउड की लेते हैं ना, Right. अब क्लाउड की Yeah. मशीन पे ही क्लाउड का ले लिया है मैंने Okay. प्राइवेट आईपी से, क्योंकि आपकी मशीन तो वैन में है ना। पेयरिंग कनेक्शन तो VNet 1 टू VNet 2 करा है, आपके घर के नेटवर्क से थोड़ी ना करा है मैंने। Yeah. ये देखिए आप मशीन के अंदर मशीन है। गॉट इट? इज इट क्लियर? नाउ क्लियर एवरीवन? So, Yes, sir. लाइक MUKESH Mukesh VM।
और दिस इज अ राकेश वीएम। ये जो बेस है मैंने राकेश वीएम से मुकेश की वीएम को एक्सेस करा है। बट गाइज अब एक और ऑप्शन यहाँ पे आता है कि अब मैं पेयरिंग कनेक्शन करना चाहता हूं। आई एम इनेबल द पेयरिंग कनेक्शन। तो देखिए अब मैं अगर यहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन करूंगा ना, आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ पेयरिंग कनेक्शन एंड देन ऐड पेयरिंग कनेक्शन। तो मैं 1 से 3 के बीच में कम्युनिकेट कराना चाहता हूं। बट यहाँ पे देखिए मेरा डेस्टिनेशन में इन वर्चुअल रिमोट वर्चुअल नेटवर्क में, यहाँ पे डेस्टिनेशन नेटवर्क में मेरा वीनेट 3 तो शो ही नहीं कर रहा। गॉट इट? 1 और 2 आ रहा है ना, 3 तो नहीं आ रहा ना। तो 3 ना आने का रीजन है बिकॉज द 3 वर्क इन अ डिफरेंट रीजन। राइट। और आपको पता है कि अगर आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना हो तो यू ऑल्सो नीड अ VNG। You need a VNG। VNG called अभी बता रहे हैं। You need a VNG। This is a VNG for India, Virtual Network Group Virtual Network Gateway. Gateway. Sorry. This is a VNG for East US. And now you enable the pairing between VNGs. Okay. That is a border. Yes. Got it, guys? Okay. Yes. So you enable the connection between here. तो कभी भी आप डिफरेंट रीजंस को जब कम्युनिकेट कराओगे तो आपको वर्चुअल नेटवर्क गेटवेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वन मोर थिंग, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको बता देता हूं। इन इंडिया देयर इज अ 2 VNet इज अवेलेबल। द 1 VNG यूज फॉर 1 VNet। अगर आप VNet 3 को आप दोनों VNet से कराना चाहते हो तो एक VNG आपको बनाना पड़ेगा VNet 2 के लिए और एक VNG आपको बनाना पड़ेगा VNet 3 के लिए। Oh, तो एक भी नेट पर मतलब ओके सेपरेट यानी बनाना कि पड़ेगा 1 यहाँ पे। VNet 1 VNG, then Okay. VNG, and these are the VNG, these are the 3 VNG। अब आपने अगर कम्युनिकेट कराया, लाइक यू कैन प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन VNG2 to VNG3। गॉट इट? Hmm. सो आपका VNG VNet 2 और VNet 3 ही आपस में कम्युनिकेट करेंगे। द VNet 1 इज नॉट कनेक्टेड विद VNet 3। चाहे ये आपस में यहाँ पे कनेक्टेड हो बट फिर भी ये इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। अगर आप कम्युनिकेट कराना चाहते हो तो आपको इसके साथ भी एक और कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। तो अब क्या हुआ? VNet कनेक्टेड विद VNet 2 और VNet 3 कनेक्टेड विद VNet 1। थोड़ा कंफ्यूज? At all. सिंपल It's too much clear. सिंपल सा है कि आपके पास 3 वर्चुअल नेटवर्क, यानी कि अगर मुझे सिस्टी से कनेक्ट होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना VNet बनाना पड़ेगा और मैं डायरेक्ट सिस्टी से लिंक बनाऊंगा। सिस्टी की कंपनी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करूंगा। और अगर मुकेश को सिस्टी के साथ कंपनी के साथ कम्युनिकेट करना है तो सिस्टी अपने VNet से सिस्टी के VNet के साथ कम्युनिकेट करेगा। गॉट इट द उसके लिए पॉइंट? सेपरेट ये VNG बनाना बिल्कुल, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं चलता। पड़ेगा। Okay. सिस्टी गॉट इट द पॉइंट? तो नाउ कि सपोज मैं यहाँ Yes, पे ये sir. जो VNG बना रहा हूँ, आई एम कनेक्ट दिस VNG फॉर दिस एंड नाउ दिस। That's why, in your language, we want to get the documents as well. I know you will write the documents in simple language so that it could be quite easy for me to understand, right? तो The सिंपल terminology and all लैंग्वेज में that. डॉक्यूमेंट्स तो नहीं मिलेंगे, वो तो तभी मिल सकते हैं जब किसी के नोट्स बने हुए हो। बनाए हैं सर किसी ने, क्योंकि जिस वे में आपने एक्सप्लेन किया ना, ये नहीं मिलेगी लैंग्वेज, नेट पर नहीं मिलने, पॉसिबल नहीं सर, हमने बहुत सर्च मार गाइस लिया। वही तो है ना, तो To be आपको honest. वीडियो देख के डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे। कोई भी बनाता ही तो नहीं है, सबसे बड़ी चीज है। मैं आपसे ही कहूंगा, आप भी नहीं बनाओगे। मुझे कोई बना के दे तो सही। ये चीज आपको नेट पे नहीं मिलेगी, ये डेफिनेट है।
नहीं, वही तो, इसलिए तो मैं आपसे बोला था, आई नो डॉक्यूमेंट्स से बहुत, देयर आर मेनी रिसोर्सेज थ्रू व्हिच वी कैन डाउनलोड ऑल काइंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, बट इफ So आई now टॉक how अबाउट to create सिंपल, यस, VNG? So how to create VNG? I'm just search in VIRTUA virtual network gateway. So this is a VNG is one kind of VPN. Okay. ओके, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। तो इसको आप वर्चुअल नेटवर्क गेटवे को ही VNG को VPN तो को इन्होंने वीपीएन ऐसे ही प्राइवेट बोलते हैं सर गेटवे को क्या? नेटवर्क या क्या चीज? तो वीएनजी को ही हम वीपीएन बोलते हैं क्या? नो नो नो, यहाँ पर ये VPN का ही काम है। यहाँ पे जो मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ वो VPN ही सिलेक्ट करूंगा। तो तो मतलब हमारा जो वीपीएन वी कम्युनिकेशन है कैन वो से, VPN के थ्रू होगा। राइट, तो वीपीएन एंड वीएनजी बोथ आर सेम, दैट यू आर सेइंग, वो अलग है? नहीं ना, VNG इज अ गेटवे और उस गेटवे को जो हम कनेक्टिविटी कराएंगे VPN के थ्रू कराएंगे। ओके, VNG नेम इज गेटवे, लाइक इंडिया का गेटवे है, लेकिन कम्युनिकेशन किसके थ्रू कराएंगे? VPN के थ्रू। यानी कि दोनों गेटवे VPN के थ्रू कनेक्ट होंगे। सर ये एक थोड़ी थोड़ी प्राइवेट आप टनल बनाएंगे आप ना। उसमें, अंडरस्टूड, आप ये थोड़ा थोड़ा वो लिखते जाइए, मैं वीडियो से फिर नोट्स बना लूंगा कि मतलब वीएनजी को क्या एक्चुअली क्या क्या है है, इन थोड़ा हल्का फुल्का। एक्चुअली क्या है कि हमारे इन नेटवर्क्स के बीच में एक सिक्योर टनल बनेगा, राइट, और ये जो टनल बनेगा ना, दिस इज कॉल्ड VPN। फाइन। ओके, ये सिक्योर वीपीएन रहेगा, कम्युनिकेशन के लिए। जो वीएनजी के हाँ, बीच में जो टनल होगा उसको वीपीएन, ओके। तो लाइक VNG VNet 1 मैंने यहाँ पे करा, हम्म, और सेंट्रल इंडिया है मेरा VNet 1। और यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, क्या VPN के थ्रू कराना चाह रहे हो या एक्सप्रेस रूट? तो एक्सप्रेस रूट का मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का एक बैकबोन नेटवर्क भी बनाया हुआ है वर्ल्ड वाइड। उस ओके, पे कोई पब्लिक ट्रैफिक नहीं है, उसका पर्सनल नेटवर्क है। वो कहता है आप मेरा पर्सनल नेटवर्क यूज करना चाहते हो या पब्लिक नेटवर्क? तो मैं ले रहा हूं पब्लिक नेटवर्क, लेकिन पब्लिक नेटवर्क में मैं VPN के थ्रू कर रहा हूं। गॉट इट? तो मैं यहाँ ओके, पे बट ले रहा मैं, हूँ कि मैं VPN के थ्रू कम्युनिकेट एक कराना क्वेश्चन है चाह रहा हूँ। सर, जब हम वीपीएन से कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर हम वीएनजी क्रिएट क्यों कर रहे हैं? वीपीएन से तो हम वैसे भी एक्सेस कर गेटवे तो सकते हैं। चाहिए ना, गेटवे तो चाहिए, एग्जिट पॉइंट तो चाहिए ना। VPN तो है हम्म, ना, तो आपका गेटवे और मेरे गेटवे को कम्युनिकेट VPN कराएगा। भाई दो कंट्रियों के बीच में स्पेस खाली पड़ा हुआ है, तो उस स्पेस को हम्म, आप किससे फिल करोगे? ओके, सिंपल सा है यार, ये आपकी कंट्री है, ये मेरी कंट्री है, ये जो बीच का स्पेस है इसको किसके थ्रू कवर करोगे? उसके तो लिए यहाँ हम पे वीएनजी टू वे क्रिएट हैं, करेंगे। या तो आप अजूरे का बैकबोन नेटवर्क यूज करके इनको कनेक्ट कर दो, हम्म, या आपके पास दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि आप VPN के थ्रू कनेक्ट कर लो। तो मैं कहता हूं ठीक है, मैं VPN के थ्रू कनेक्ट कर लेता हूं। क्लियर? यस सर, तभी तो, जब तक ये कनेक्ट नहीं होंगे तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? हमने गेटवे अपने अपने घर का दरवाजा लगा दिया, बट हमें बीच में रोड तो बनानी पड़ेगी। बीच में कनेक्टिविटी के लिए कुछ तो ऐड ऑन करना पड़ेगा, बीच में एक कहते हैं ना, एक फ्लाईओवर तो बनाना पड़ेगा फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड को कनेक्ट करने के लिए। राइट, So now I'm just click on VPN, root based and general purpose virtual network. So now I'm select a virtual network is VNet 1. और गाइस जब मैं VNet 1 सेलेक्ट करूंगा ना, तो ये गेटवे सबनेट के लिए अपना भी एक सबनेट क्रिएट करेगा, गेटवे, जो मेरे दूसरे गेटवे के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो देखिए यहाँ पे ओके, ऑटोमेटिकली इसने एक गेटवे अपना ले लिया है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ /26 ही कर देता हूँ, यानी कि 64 आईपीस मैंने किसके लिए एलोकेट कर दिए? गेटवे एड्रेस के लिए। ओके, क्योंकि हमने वहाँ पे भी ऊपर 64 ही लिए थे, 64 को अलाउ किया था, राइट, उतने ही हम या करना चाहते हैं हम। या तो नाउ गाइस कि मैंने यहाँ पर इस गेटवे के लिए भी एक रेंज एलोकेट होगी, जैसे यहाँ सबनेट के लिए हुई है ना, इसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने एक 10.0.0.0/24/26 का एक सबनेट यूज होगा, और ये सबनेट वो ऑटोमेटिकली बनाएगा, आपको नहीं बनाना है। सेम ओके, एज इधर से भी बनेगा। सो नाउ अभी मैं जाता हूं, एंड नाउ नीड अ पब्लिक आईपी, आपको गेटवे के लिए एक पब्लिक आईपी चलेगा। तो लाइक
vng1-pip। मैं एक पब्लिक आईपी क्रिएट कर रहा हूँ एंड स्टैंडर्ड अवेलेबिलिटी जॉन, तो देयर इज अ वैल्यू इज जॉन रेजिडेंट, क्योंकि मैं डिफरेंट रीजन्स के बीच में बना रहा हूँ और डिफरेंट जॉन भी मेरे हो सकते हैं कि मेरे विद इन रीजन जॉन भी अलग अलग हो सकते हैं, तो मैं जॉन रेजिडेंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ एंड रिव्यू एंड क्रिएट। तो ये VNG VNet 1 मेरा पहला बन रहा है, तो ये जो VNG मैं बना रहा हूँ इट्स फॉर VNet 1। तो ये जो VNG है ये कहाँ के लिए बना है मेरा? VNet 1 के लिए। सेम एज आई एम क्रिएट अनदर VNG फॉर VNet 2। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन होम, सॉरी VNet 3 के लिए बना रहा हूँ, 2 के लिए नहीं बना रहा मैं। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन वर्चुअल नेटवर्क गेटवे एंड गाइस ये गेटवे डिप्लॉय होने में 15 to 20 मिनट्स ले जाता है। नाउ क्लिक ऑन क्रिएट Okay. एंड नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अनदर VNet। तो यहाँ पे देखिए आपका सब्सक्रिप्शन एंड लाइक VNet 3-VNG, यानी कि VNet 3, और VNet 3 मेरा किस लोकेशन पे है? ईस्ट यूएस में है। एंड नाउ आई एम जस्ट सिलेक्ट द नेटवर्क, दिस इज द VNet 3, और देखिए ऑटोमेटिकली एक नेटवर्क सबनेट इसने ले लिया। एंड नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन 26 and create a new like VNet 3-PIP public IP address and John resident ये and हमें मेंशन करना review and पड़ेगा पीआईपी सर पब्लिक के लिए। एक पब्लिक आईपी तो देना पड़ेगा ना गेटवे को भी। राइट, तो पीआईपी लिख दूंगा, राइट, ले लेगा वो। या पीआईपी का मतलब ही पब्लिक आईपी, वहां पे नाम डालना है, वो आपको आईपी नहीं दिखाएगा, आईपी तो बाद में दिख जाएगा आपको। बस ओके। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहता है आप नेम ऐड ऑन कर दो, वो बैकएंड से अपने आप ही आईपी ऐड ऑन कर देगा उस नाम पे, यानी कि मैपिंग कर ओके। देता है। ओके। So now guys, I'm create a two virtual network gateway. So these virtual networks here I deploy and it's work in under process. So it's go for around 15 to 20 minutes और मे बी 5 मिनट्स में भी हो जाए, so depends on the processing. So अगर आप फ्री टायर अकाउंट पे करते हैं तो 20 to 25 30 मिनट्स लेके चला जाता है, बट पेड अकाउंट पे हम कर ओके। रहे हैं तो ये पहले हो जाएगा, जल्दी हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, बट फिर भी आई थिंक सो 10 to 15 मिनट्स तो लेके जाएगा ये। तो इट इज अ पेडेबल सर्विस, कॉस्टली सर्विस है ये काफी। तो मैंने लास्ट टाइम इन जब बिटवीन डिप्लॉय सर करा था और मैंने रनिंग छोड़ दी। कैसी? write down the definition for VNC, VNet, and VPN so that it could be cleared over there. VPN हम अभी आगे पढ़ेंगे। VNet इज द नेम ऑफ नेटवर्क, VNG इज द नेम ऑफ गेटवे। तो VNet को कम्युनिकेट कराने के लिए VNG गेटवे चाहिए, यानी कि सिंपल सा है, देखिए ये एक आपकी बिल्डिंग है, ये मेरी बिल्डिंग है, ठीक है ना। अब बिल्डिंग के अंदर 3 फ्लोर है, तो वी डोंट Right. रिक्वायर्ड कि मुझे गेटवे की जरूरत है, क्योंकि विद इन बिल्डिंग हूं, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे Yes. जाना है। बट अगर मेरे को इस बिल्डिंग से बाहर आना है और इस बिल्डिंग से बाहर आना है, तो मुझे दोनों Then we बिल्डिंग required का VNG. गेट तो चाहिए, एग्जिट तो चाहिए ना। तो दिस एग्जिट पॉइंट इज कॉल्ड अ गेटवे। Virtual network gateway. Okay. VNG. अब इन दोनों गेटवे को आपस में कनेक्ट भी कराना है। मैं That चाहता is हूं कि called भाई यहां से बंदा यहां पर जाए और यहां से बंदा यहां पर आए, बट वो तो तब जाएगा ना जब ये आपस में कनेक्ट होंगे। अब इनको right. कनेक्ट कराने के पास हमारे पास दो हैं, या तो वी हैव यूज्ड द अजूरे एक्सप्रेस रूट, या दूसरा वी हैव यूजिंग द सेकंड ऑप्शन इज VPN। VPN. तो वो कह रहा है आपके पास सर 2 ही वे हैं, या तो आप नाव चला के आ जाओ या फ्लाईओवर बना लो इसके ऊपर। कहते भाई फ्लाईओवर नहीं बनाना, हम एक काम करते हैं, नाव है हमारे पास, हम टनल बना दो हमारी और एक कम्युनिकेट कर दो। अब हो गए Clear. कनेक्टेड। Yes. Simple as that. If we want to connect the different VNC, then we need to use either Express route service, which is provided by default by Microsoft, or VPN. We can use, right? या सिंपली नहीं, आई एम सर्च विद यू कि इज व्हाट इज एक्सप्रेस रूट इन अजूरे।
So now the Okay. use Azure Express Route to create a private connection between Azure data centers and infrastructure on your premise or in collections environment. Is it simply? सिंपल सा है. आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट सर्च करोगे ना, आप पर्टिकुलर अजूरे लिखिए तो माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट्स आपका एड ऑन हो जाएगा. यही मैं So the पूछ रहा हूँ सर, जैसे connectivity हमें can be ये performed for any to any is IP VPN network, a point-to-point Ethernet network, or a virtual cross हम्म, connection through a connectivity provider at a collecting facility. The express route connection don't go over the public internet. हमें public internet पे जाने की जरूरत जरूरत ही नहीं नहीं है. है. This allow express route connection to offer more reliability, faster speeds, consistent latencies, and higher security that typically connection over the internet. तो ये यहाँ पर कॉस्टली क्या होगा है, ना VPN से सर, है या ना? ये डेफिनेटली कॉस्टली होगा, बट यहाँ पे क्या है, एक डेडिकेटेड. सो यहाँ पे देखिए हमने भी क्या एक टनल बनाया है. तो एक्सप्रेस हम्म, रूट हमारे पास है या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है. VPN है. हम्म, दो ही हो सकते हैं और तो कोई है नहीं इसके अलावा ना टनल के लिए. नहीं यार, तो VPN. ऑप्शन ही नहीं आ रहा तो है, ऑप्शन ही नहीं है तो हम कहाँ से लाएं. वहां कोई करेक्ट. तीसरा ऑप्शन हाँ, बट आता तो हम AWS करते ही. वगैरह में और कोई क्लाउड में उनकी कोई अपनी बाय डिफॉल्ट हो सकता है ना. बिल्कुल है यार, हर कंपनी है, बट माइक्रोसॉफ्ट ने तो अपना खुद का सिर्फ यही दिया बनाया है है. एक्सप्रेस रूट. या तो ये चीजें सर इंटरव्यू में पूछ सकते हैं ना कि व्हाट इज द एक्सप्रेस रूट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन, यू नो. डेफिनेटली 200%. तो मुझे एक हिंट दे देना कि मुझे किस चीज पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, मैं बना लूंगा नोट्स खुद बैठ के और क्या करूंगा. देखिए जो भी टॉपिक है ना उसके आगे व्हाट इज लगा दो. देखिए सामने वाला कुछ भी यूज करता है, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हर चीज का ना एक लॉजिक है. गॉट इन माय राइट. पॉइंट. तो गाइस द रिसोर्स ग्रुप इज क्रिएटेड, यहाँ पे लिखा आ रहा है, एंड इज अंडर प्रोसेस. सो इफ इट डन देन वी हैव एस्टैब्लिश्ड द, देन अब उसके बाद हम जो पेयरिंग करेंगे ना, जो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट करेंगे, वो बिटवीन वीएनजी करेंगे. करेक्ट. ये तो सर आपने है, लेकिन सेटपा वालों ने तो कोई डॉक्यूमेंट्स बनाए ही होंगे ऑब्वियसली बात, स्टूडेंट्स के लिए जो वो पढ़ते हैं. नो, सेटपा नथिंग वाले भी नहीं यार. बना के रखते हैं. सेट ये पर तो क्यों फर्स्ट बना के इंस्टीट्यूट ऐसा है रखेगी, ये जिसमें हमें मिल ही रहा एक्चुअली है क्या क्योंकि है हर ना, डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली कोई भी इंस्टीट्यूट आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देगा. वो आपको वीडियो दे देगा और डॉक्यूमेंट्स आप लेके देखो तो सही, आपको कुछ समझ नहीं आएगा जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाओगे. एक मैं आपको चीज बताता हूँ, बने हुए डॉक्यूमेंट्स पे कभी भी ट्रस्ट मत करना, वो उसने अपने माइंड से बनाए हैं. आप खुद ओके. से प्रैक्टिस करो ना, आपको पता लग जाएगा आप क्या करने जा रहे हो. वो डॉक्यूमेंट्स बनाओ ना, मेहनत लगेगी, ऑलराइट. बट डेफिनेटली कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएगा. सही बोल रहे हैं, उसी को मैं प्रॉपर नोट्स बनाता जाऊं. अच्छा, बीटेक तो नहीं करा आपने? नहीं. बीटेक तो नहीं करा, नहीं क्योंकि किया. बेसिकली बीटेक वाले बच्चे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं. So now I'm just going virtual machines, और हम देखते हैं कि जो हमने थर्ड वर्चुअल मशीन बनाई है इसका प्राइवेट आईपी क्या है. दिस प्राइवेट आईपी एड्रेस इज 16.0.4, and now if I'm just come to here and then open the remote desktop connections and right click and open in new window, and that is 172.16.0.4, and now click on connect. So it give you the error because there's a no connectivity between India to VNet 1 to US. VNet 3. Right. No, and simply the India to US. Because I'm already explaining you in a first class, in an introduction class, there's a no connection, there's a no communication between regions by default, but we can do. तो अगर आपसे पूछता है कि अगर आपको दो वीनेट्स के बीच में, अगर मेरी एक कंपनी सेम रीजन में, मेरे अलग अलग कंपनीज हैं और हर किसी का अलग अलग नेटवर्क है, तो आप उसको किस तरीके से कम्युनिकेट कराएंगे? तो वी प्रोवाइड द कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ Peering. वीनेट. और Yeah. अगर देयर योर infrastructure deploy in two different region, उस केस में, so when you deploy infrastructure in two different region and different vnet, so in that case we have the two options. Either we are using a express route, Express. and Yes. second is a VPN, but both are implemented with the virtual network gateway. We need a virtual network gateway, or inside the virtual network gateway there are the two option is available. One is VPN, second is express route. Yeah. Got it the point?
इतना भी बता दिया तो इंटरव्यू वाला समझ जाएगा कि यार नॉलेज है। ना तो पूरा ही हो गया सर। सब कुछ हो गया। So now just wait and watch for मैं deployment. So इंटरव्यू सेटअप करवा दूंगा आपके थ्रू से। वर्चुअली ले ले भाई, लैंग्वेज आपके सिलेक्ट कर दूंगा बस। so resources is under process. So just wait for, so हम क्या करते हैं, just take a 5 minute break and then continue. श्योर, Okay. नॉट एन इशू। Okay, so I'm श्योर just stop the recording for 5 minutes or either continue. So हम stop कर देते हैं 5 minutes के लिए recording श्योर श्योर। and just This conference will now be recorded. VNG is deploying successful. So both VNG deploying successful and I'm just click on a home and now I'm enable a pairing between VNGs. So now I'm just go to the virtual network gateway. So I'm just click on a virtual network gateway. I'm just recall, refresh, and now just a minute. So now guys, is it I'm go to the virtual network gateway and there's the two gateways available is one is virtual network group and I'm not go for the virtual network group. I'm just click on VNG network security group. Where is VNG? Virtual VIRTUA virtual network gateways. So now I'm just click on virtual network gateway. These are the two virtual network gateways are available. And I'm just click on VNG VNet 1 and then click on connections and then add connections. And now the select name is like VNet 1 hyphen 2 hyphen VNet 3 and select VNet to VNet. This is the first network is VNG VNet 1 and second network is where is it's not show VNet VNG VNet 1 show wait. Okay, now I'm just click on again back and then again click on home virtual network gateways and now click on VNet VNG3 is pairing resource group and this is the India resource group. I'm just click on VNG VNet 1 and now connections then add and now select to use the virtual network with the connection must to associate to the virtual network gateway. What happened? It's also connected with gateway now. It's connected, it should be showing now. I think that it's connected now. Is it connected? I'm just go to the VNet 3 and Connections. wait, I'm just click on configure. Is it available? Click on connections. Then click on add. Now is it VNet to VNet? VNG3 is available and now I'm just select with VNet 1. So अब update हुआ है. So this is a connection is VNet 3 to VNet 1. Got it? तो मैं यहाँ पे 3 पे हूँ. 3 से आके मैंने VNet 1 को select करा है. And now I'm just give the one key 1 2 3 4 5 6 7 8. मैंने यहाँ पे एक की भी दे दी है कि जब तक दोनों गेटवे के बीच की कम्युनिकेशन नहीं होगी मेरा कनेक्शन भी एस्टैब्लिश नहीं होगा. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ VNet 3 से आगे VNet 1 को सिलेक्ट करा है मैंने. ये आपने सर टॉप Okay. में क्या लिखा? VNet 3 to VNet 1 2 भी है? VNet 3 नहीं तो यहाँ पे हो मैं गया ना. 2 का मतलब वो हो गया यार. अच्छा अच्छा, तभी तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, 2 कहाँ से आ गया? And now click OK. ओके तो ये मैंने VNet 3 से VNet 1 को सिलेक्ट करा है. Same as I'm just go to VNet 1 और VNet 1 से आके VNet
3 को सिलेक्ट करूंगा, यानी कि वाइस वर्सा वाला है। गॉट इट, अपोजिट रूट भी मेरे को बनाना पड़ेगा। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन VNet 1 एंड क्लिक ऑन कनेक्शंस एंड कनेक्शन में जाने के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन ऐड एंड ऐड करने के बाद VNet 1-2 VNet 3 and now VNet 1 already, now I'm select a VNet 3 and the same key 1 2 3 4 5 6 7 8 से PS के pre-shade की मेरी मैच होनी चाहिए। now click OK, अच्छा, यानी कि दोनों तरफ सेम की मेरी यूज होनी चाहिए। इज इट क्लियर? now I'm just click on refresh and it's come to the updating mode और now अभी थोड़ी देर में यहाँ पे connected लिखा आ जाएगा एंड इफ अगर मैं अब यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि 60 वाली मशीन एक्सेस होती है या नहीं, तो हम जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट, क्योंकि अब मैंने दोनों वीनेट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है। सो इफ आई एम जस्ट कनेक्ट बोथ वीनेट्स, तो ये मशीन मेरी यहाँ पर एक्सेसिबल होनी चाहिए। right. So it's take a time because my VNet is not updating fully fledged, so just wait for, तो यहाँ पे processing is running on है। Got it Yes. guys? तो Yeah. एक तरफ मेरा एक कनेक्शन अपडेट हुआ है अभी, बट जब तक दोनों तरफ के कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होंगे, तो जब तक नहीं होगा। नाउ इट्स रनिंग ऑन, सो यहाँ पे भी मेरा कनेक्शन चल रहा है, क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन VNet 1 टू VNet 3 और आप Yes. देखिए यहाँ पर मेरा कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। Yes. VNet 3 VNet to 1 3 तो to हो गया, V1. 1 to 3 अभी रनिंग है। Yeah. जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड। Now is update. Yes. Got it the point? Yes, sir. Now we'll try again. Is accessible. And now this is a Frishti machine. So this is a way how to provide the communication between a same region, or either you can provide the communication between a different region. So ये हमारी तीसरी Sure. मशीन भी आ गई। So these are the all 3 virtual machines Accessible. accessible. Correct. Now is it clear? Srishti, is it Yes, sir. clear? So guys, it is a very costly service, so आप इन सब चीजों को डिलीट करना ना भूलें। फाइन, तो Sure. अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तो आपके बहुत ही तगड़ा वाला बिल बनेगा। तो दैट्स बेटर कि आप इन सारी चीजों को डिलीट जरूर कर दें। Sure. And I'll End take to 5 end. minutes more, sir, after completing this topic. So actually Okay, I am after using the stopping the recording. pay. So thank you, and I'm stop the recording.